Hello everybody, welcome back to another video. In the previous video, we learn about how we can deal with a different data set and the charts. Today's particular video, we will try to learn some new things also. That is something bookmark and the measures. What exactly it is, we will talk about. Now, I believe everyone can see my screen, and over here I have loaded a data set. This is the data set just like Amazon. Amazon is a company for e-commerce, and this is the data similar to that. So orders, what are the orders you have taken? I have taken this data because it is easy for all of us to understand. This is my data, return, right? Orders like product, what is the product name? If you want to read about the data more now, just go to the left hand side. There is a view section. You can read the data or in the format of a tabular, very easily to understand. You can see raw ID. Okay, what is the order priority? It is a high priority. Discount is 0%. Unit price is 99 rupees or dollar. Yeah, shipping cost is this. Each and everything we have here, right? Because this is something very easiest to understand. Now, what we will do that right now, we will try to build some charts and I'll explain it to you. Bookmark first of all. What I will do, I will open this orders now. This order, I'll try to make some chart like first of all, I'll create a pie chart. Simply a pie chart. Again, we know that pie chart is nothing but this is a chart you will build whenever you have a small amount of a category, right? If you have a huge category, pie chart won't make sense over there. So let's try to build it up. Now this is my pie chart. I will drag the country column. You can see there's a country column and I can drag it to the legend directly. And the values, I'll put this profit. Yeah, value should be profit. Let's see how it looks like. Hmm. Oh, only I have a country, United States, so it won't make sense, right? So because country is the column which contains only one country, that is the United States. So it's not making any sense. So I'll remove this right now because it not looks good, right? So what we will do that, let's take a, do we have a city over here somewhere? Postal code. Let's see the postal code or this bar chart I'll try to build. And I'll take a x-axis product name and the profit of y-axis. Let's see. We can see this. See, it makes sense, right? I'll show it to you how. You can see that into the x-axis, I took a product name, the name of my product. This is, you can see electric purchase or something. This is my product names, different products we have. And into the y-axis, I take a profit. So in this particular product, I generated a profit approx 23,865 rupees or dollars, anything, right? So how I did this कि सर मुझे x axis पे product name लेना है या y axis पे profit लेना है. If you remember last video, I have explained it to you also. जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कैटेगोरिकल वैल्यू हम लेते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द बार चार्ट और वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू आता है. ऑलवेज मेक श्योर अगर हम पाई चार्ट बना रहे हैं तो एक वैल्यू न्यूमेरिकल होगा और एक वैल्यू कैटेगोरिकल होगा जहाँ पे कैटेगरीज होंगी. Then we can easily understand the data. Okay, sir. We understood this is the part. We build one of the chart. That's fine. Fine. Because our agenda is to learn bookmark. I'll explain it to you that. मैं एक और chart बना रहा हूँ. Right. I'll make this donut chart. Anything. Yeah, it looks like a donut, right? Now just drag this up and I'll took this state of provenience legend and sales, right? And the value should be sales. Okay, now you can see this now. This is my pie chart and it is showing what? Okay, this blue one is okay. This is the New York City or state and the sum of the sales with this particular city is 11.64%. This is the largest one. And another one is California. Here I have 14.98%. This is the benefit of pie chart. You can easily understand, right? Okay, in these two countries, I have a highest sales, right? The smaller one is this. You can drag this up over here. Okay, so we are understanding it. Fine, sir, fine. But sir, now over here,
bookmarks comes into the picture. Very easy, it is very easy. Just come over here. The benefit of bookmark I'll explain to you. Have you ever used a book, what I can say, Chrome in your mobile, in your laptop, right? You know that Chrome. The in a Chrome there is an option star button which you bookmark something. Bookmark means आप चीज एक बार ओपन करते हो एंड यू विल सेव दिस राइट, आप उसको वहीं पे सेव कर लेते हो. वेन एवर यू वॉन्ट टू री ओपन इट, आप बुक मार्क पे जाओगे एंड यू विल क्लिक ऑन दैट बटन, वो दोबारा से वहीं से ओपन हो जाता है. यू डोंट नीड टू गो टू दैट लिंक और वेबसाइट अगेन एंड अगेन, राइट. दैट मीन्स बुक मार्क मतलब एक चीज को एक जगह पे सेव कर लेना, एंड वेन एवर यू वॉन्ट क्लिक ऑन द बुक मार्क सेक्शन और वो चीज वहीं से री ओपन हो जाएगी, राइट. सेम चीज यहीं पे बहुत इजी है. जस्ट कम हियर एवरीबॉडी. व्हाट आई डू, गो टू द इंसर्ट सेक्शन, सी दैट, एंड गो टू द शेप्स. आई कैन पिक एनी ऑफ द शेप. अभी के लिए मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ. सो ये मेरी दो शेप्स हैं, यू कैन सी दैट. दिस इज माई फर्स्ट शेप एंड आई टुक अनदर शेप ऑल्सो. दिस इज माई अनदर शेप, राइट. टू शेप्स आई टुक. ओके, नाउ ये मेरा शेप वन और शेप टू. ये जो शेप है, आई कैन गिव अ नेम फॉर दिस शेप, राइट. हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बुकमार्क. तो मैं बुकमार्क का जो सेक्शन है, वी हैव टू टर्न इट ऑन. So go to the view section and over here you can see bookmark is the option. Turn it on and the selection pan also, two things, right. Now select this shape. Now जैसे ही मैं shape select करता हूँ, what I have to do, I have to create a bookmark. You can see bookmark, click on add. मैं bookmark को rename कर दे रहा हूँ, just rename it. मैं इस bookmark का नाम दे देता हूँ bar. bar, or just remove this. I'll take a name bar simply. Now अभी what I will do, I will create another bookmark also. मैं इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ this shape and I'll create another bookmark. और इस bookmark के लिए I'll rename it again and this is something pi. Hmm? This is something pi. Fine. Now I will select this bar chart. I have created a two bars. I will create this bar and select this bar bookmark. जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कैन यू सी दिस सिलेक्शन पैन में फोर थिंग्स. ये जितने भी मैंने शेप्स बनाए हैं उन सभी का सिलेक्शन यहाँ पे आता है. एंड आई हैव देयर इज अ आई सिंबल, यू कैन सी दिस. जस्ट क्लोज दिस. सी, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, सिर्फ एक ही चार्ट बचा है यहाँ पे, राइट. एंड ये जो आई है, आई हैव क्लोज दिस एंड गो टू द बार सेक्शन, थ्री डॉट्स एंड अपडेट. That's fine. Now select the pie. Pie is another bookmark. Select this. जैसे मैं इसे select करता हूँ, मुझे ये वाला off करना है. तो go to this one and turn on this eye, right? And go to the pie, three dots and the update section, right? Now what I did, मैंने दो bookmark बनाए और ये जो बुकमार्क है मैं इन दोनों बटन्स के ऊपर ऐड कर दूंगा. तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, दैट बुकमार्क एक जो चार्ट है उसको हाइड कर देगा, राइट. और ये वाला बुकमार्क पाई चार्ट को हाइड कर देगा, राइट. सो व्हाट आई हैव टू डू, इस जो शेप है मेरा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसकी फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, ये जो एक्शन है आई हैव टू टर्न इट ऑन. नाउ जो टाइप है आई हैव टू चेंज इट टू बुकमार्क, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड अ बुकमार्क. बुकमार्क कौन से वाला, इस शेप के लिए मुझे बार चार्ट चाहिए, राइट. और दूसरे वाले शेप के ऊपर टर्न ऑन द एक्शन, गो टू द टाइप, सेलेक्ट द बुकमार्क, और कौन सा चाहिए, मुझे पाई चाहिए. दैट्स इट, दैट्स इट. नाउ व्हाट आई विल डू, यू हैव टू क्लिक विद द कंट्रोल बटन, कंट्रोल एंड क्लिक दिस बटन. कैन यू सी दिस, सिर्फ ये वाला चार्ट आ रहा है, ये वाला हाइड हो गया. क्योंकि व्हाट आई डिड, ये जो मैंने बुक मार्क बनाया है, ये बुक मार्क मैंने इस अकॉर्डिंग सेट किया है. जैसे ये बुक मार्क सेलेक्ट होगा, ये वाला जो पाई चार्ट है दैट विल बी हाइड. नाउ मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा, दूसरे पे कंट्रोल क्लिक. नाउ ये वाला आ गया, ये वाला हाइड हो गया. So this is the benefit of a bookmark, and where it will be used whenever we create a large डैशबोर्ड्स. देर आर सम थिंग्स जो मुझे हाइड करना होता है, जो हमें हाइड करना होता है. एट दैट टाइम बुकमार्क विल बी हेल्पफुल. along with that we will learn one more thing. I hope this is something clear for all the people. Now we will learn one more thing, that is called a, just come over here, that is called a measure. What exactly measure is, very easy, बहुत simple है. If you done
In Excel, you have seen a calculations, right? We apply a sum formula and many more formulas, right? ये वही है. Measure means nothing but जहाँ पे calculations होती हैं. यहाँ पे we are building a visualization simply. हम सिर्फ drag and drop कर रहे हैं. But sir, on that visualization मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पर कोई calculation आए, right? वो for example, sir, I'll click on this new measure. You can see this new measure. Yeah, click on this new measure. When I click on this, यहाँ पे एक section open हो जाता है at the top, and it's coming. Yeah, यहाँ पे what I will do, जो formulas Excel में है ना, moreover, all the formulas come over here. मैं लिखूंगा sum. I'll click on this sum because I make a sum. मैं कुछ भी select कर सकता हूँ. Can you see this? ऑर्डर इज माई टेबल नेम. ऑर्डर के अंदर सिटी है, जितने भी कॉलम्स है, अभी मुझे सम लेना है. आई पिक एनी ऑफ द कॉलम. आई पिक डिस्काउंट कॉलम. why I choose discount? Because discount column is a numerical, right? Numerical column. And close the bracket. मुझे अपने ऑर्डर्स का सम चाहिए, जितने भी ऑर्डर्स हैं, राइट? सम चाहिए. आई कैन टेक अ एवरेज, एनीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, एंड मेक एन एंटर. एज सिंपल एज दैट, राइट? क्रिएटेड. बट सर, द एवरेज वी हैव क्रिएटेड, बट मैं इसको देखूंगा कैसे? हाउ कैन आई सी इट? जस्ट कमिंग टू ओवर हियर, there is button of card. You can see this card section. Click on this card, and empty chart of card come over here, and you can see right hand side में measure एक create हो गया, and drag it over here. Simply drag. Okay, the average of my sum of the discount is 0.5%. That means मैं अपने customers को on an average 0.5% डिस्काउंट दे रहा हूं मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर. ये एवरेज है. यू कैन चेंज इट टू सम ऑल्सो. मेजर पे सेलेक्ट करो, rather than average you can create it to sum simply, and make an enter. ये अपने आप चेंज हो जाएगा. come on, it's changing. ah द सम ऑफ माई डिस्काउंट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी के ऊपर मैंने जो डिस्काउंट दिया है, वो ऑन एन एवरेज, या नॉट ऑन एन एवरेज, इट इज अ सम 95 है. एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट एग्जैक्टली मेजर इज एंड द बुकमार्क इज, सिंपली ये जो चीजें हैं विल बी हेल्पफुल व्हेन वी ट्राई टू बिल्ड द डैशबोर्ड फ्रॉम स्क्रैच. That dashboard will build in the coming videos, but right now just understand the measures and the bookmarks. So let's do one thing. We have understood, sir, the bookmark and the simply a measure. Now one more measure is there, quick measure. Quick measure is nothing but नाम से ही पता चल रहा है. Quickly it will create a measure for you. Click on this quick measure, and just select, close this. Can you see this calculations? That means Power BI has the feasibility because it's a product of Microsoft. यहाँ पे सारी चीजें AI से related integrated हैं. Click on this calculation, select a calculation. मुझे क्या चाहिए? मुझे category wise average देखना है. I want to see the average per category. I want to see the maximum per category. Sales for new customer, anything. This is something built in already, right? So what I'll do, select average per category. मैंने select कर लिया randomly. Drag here. Base value कौन सा होगा? मुझे चाहिए profit. मुझे profit मैंने drag किया. Category क्या लेता हूँ मैं? I'll take a category of what I can do. Country. I'll take a country. No, not a country is only one single column. Customer segmentation. No, I'll take a product name. Let's take a product name, right? Select this and click on add. Simply. I don't need to drag and drop anything. Come on. Adding. It's working. It's working now. Can you see this? The measure has been generated automatically. Based on what? I want to see the profit average per product name. We have hundreds of products. From all the hundreds of product, I want to see the profit or average profit for each and every product, right? And click on this enter. It will generate it now. Now you can see this profit over here. Now how you can see this? Click on this visualizations and click on this charts and drag to the profit average margin. Just select this one. Can you see this? Okay, that means, sir, on an average, each and every product I am getting 245 rupees or dollars, whatever the currency we have in our data. So this is how we generally see the product
and the average, and this is how we have seen the bookmark and the measures in Power BI. That's it for this particular video. Rest things we will see to the coming videos. Thanks for watching it. Bye bye.